Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the SST, chapter number 17, categorized in geography, and the name of the chapter is natural resources, water. So water का नाम सुनते ही हमें समझ में आ जाता है the importance of the water because water is essential for our survival. So in this chapter we are going to discuss about the water, its distribution and its scarcity problem and why do we need to conserve it. You know beta, water is very important natural resources. Almost 3/4 of the earth's surface is covered with water. So now we are going to discuss about the distribution and scarcity of water. There is so much water on the earth if we are going to compare with the other planet. और that's why we call the earth as a blue planet and watery planet. आप स्काई से इसे देखोगे ना अर्थ को तो ब्लू कलर की नज़र आएगी आपको, इतना ज़्यादा पानी है. Despite of that it is having the large amount of water, but its quantity is constant. All of it cannot be used. Problem यहाँ पर है. बेशक 3/4 अर्थ वाटर से घिरी हुई है, पर क्या हम सारा पानी यूज कर पाते हैं? नो. Nearly 97% of total water is in ocean, which is saline. We cannot use it. Then in addition, more than 2% of water is in frozen state and is deposited in the ice caps and glacier. Again, we cannot utilize it. Then there is some water in the form of evaporation and groundwater. Thus, we are left with a very little amount of water. Now, you need to understand the recycling of water. That is, we are thankful to the nature that nature is using the water cycle, recycling the water for us. The process of recycling involves the evaporation, condensation and precipitation. You can see the water evaporates from the water bodies, then it condenses, converted into the clouds, and then precipitation, turned into the rainfall. So this is the water cycle. Now what happened? When the water cycle works, so we usually form the option that yes, water is abundantly available in the nature, but it is not so. जितनी तेजी से वाटर साइकिल होती है उससे ज़्यादा तेजी से हम उसे कंज्यूम करते हैं. So what we have to do? Though this water cycle or the hydrological cycle make the water renewable resources, but still we need to understand that water is found in the different forms. It is formed in the solid also, liquid also and gas also. Water in its gaseous form is responsible for producing all fresh water resources on the earth through the process of precipitation. So why do we face the scarcity of water? पानी की कमी कैसे हो रही है? अगर हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वर्क कर रहा है तो पानी कम क्यों हो रहा है? इसके भी मेन रीजंस हैं आपके. पहला रीज़न है आपका डोमेस्टिक यूज़. जो हम डोमेस्टिक यूज़ में वाटर को डे बाय डे यूटिलाइज कर रहे हैं, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बैथिंग एक्सेट्रा. Whether we are using the water judiciously or we are overusing or over exploiting or wasting the water. The water which is used is disposed into the drains from where it flows into the water bodies. Now what happened? With the advancement, we are adopting a modern way of living, leading a large use of water per person. इतना ज़्यादा आप इमेजिन नहीं कर सकते. अबाउट 40 लीटर्स टू 150 लीटर, इतना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं. जहाँ पहले एक व्यक्ति 40 लीटर पानी यूज़ करता था, अब एक इंडिविजुअल 150 लीटर वाटर यूज़ कर रहा है पर डे. तो पानी क्या इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? और वी आर वेस्टिंग द वाटर. देन सेकेंड, एग्रीकल्चर यूज़ की बात करते हैं. लॉट ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड इन इरिगेशन. तो ऐसा तो नहीं है कि हम एग्रीकल्चर करना बंद कर दें, बट क्या इरिगेशन एक प्रॉपर साइंटिफिक लाइन पे हो रहा है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर
flow back to the river bodies. So this type of use is not very large. Now industrial use की बात करें हम, water is extensively used in the industry for various process, washing है, processing है. Once again this water is allowed to flow into drain, and what happen? This water once again go to the major water bodies. Now the big question, if water from all types of use go back to the water bodies, then why there is a scarcity of water? The answer is, भाई पानी आपने दोबारा वाटर बॉडीज में ही भेज दिया, लेकिन क्या आपने साफ पानी भेजा? आपने पॉल्यूटेड वाटर भेजा, इतना पॉल्यूटेड जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो. वी पोल्यूट द वाटर व्हेन वी यूज इट, and then we allow this polluted water to go back to the water bodies. Then अगर वो water bodies में जा रहा है तो क्या हो रहा है? वो water bodies को भी pollute कर रहा है, उसकी aqua life को भी harm कर रहा है. So we pollute more and more water when we are using. Ultimately we get water from the polluted water bodies. आप अभी देखिए यमुना रिवर की क्या हाल हो रही है, कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट उसमें गिर रहा है. It is producing like a foam. How can you utilize the Yamuna river water for drinking purpose? Lots of water treatment plant has been there. So this led to the serious diseases also. So many times we have heard in the newspaper, dirty water supplied by the municipality, it leads to this type of disease, etc. Therefore, it is very, very essential. We have to take adequate steps to meet the scarcity which we have created. Don't give this answer that government is doing nothing. That is our problem. As a citizen, we are responsible for that. So water shortage was being experienced by about 40 countries in 1999. India is a land of river. Still, India is facing the water scarcity. It is estimated more than 65 countries, including India, will face severe water shortage by 2025. What we are doing? In many places across the world, people have to walk miles to bring the potable water. बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा, बहुत ज़्यादा. कश्मीर लोग जाते हैं दूर दूर तक पानी लाने के लिए. राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो दूसरे गांव में जाते हैं पानी लेने के लिए. In India, several towns are already facing water crisis. Chennai has to struggle uses of water because of the acute shortage of water. So what we have to do? This is the biggest question in front of us. Now, we have to check the distribution of water in the world. ऐसा भी नहीं है ना कि पानी evenly distributed है, uneven distributed है. Various topography है. While one region faces flood, other parts are susceptible to the drought about the same time. Problem यहाँ पर है कि वर्ल्ड के एक पार्ट में अगर पानी है तो दूसरे पार्ट में सूखा पड़ा हुआ है. There is variation in the availability of water, not only from the season to season, but also from region to region. Even with the same continent, the availability is of water is not uniform. So distribution जो जा रहा है वो uneven जा रहा है. हमें क्या करना है? हमें उसे प्लान तरीके से यूटिलाइज करना है. आप एरिया देखो सेंट्रल एशिया की. Most of the North America and Middle East people have to bring water from long distances to fulfill their basic needs. This is chiefly due to the climatic condition. Most important source of overground fresh water is the river. Apart from that, we are having lakes, ponds, waterfalls, stream, etc. Water of most of the river has not been adequately tapped. Large amount of fresh water flows into the ocean. Problem ये भी है, river water को हम proper utilize नहीं कर पा रहे. बहुत सारी river directly oceans में चली जा रही हैं, तो वो ocean में जाके तो saline हो जाएंगी. So map shows you the different types of the water bodies. You can see here the Pacific Ocean, then in S shape Atlantic Ocean,
Then you can see the Indian Ocean here. Then once again the South Pacific Ocean there. Now, so these are the continents and important rivers in the world which has been given in your table. अफ्रीका में आपकी नाइल नाइजर है, देन नॉर्थ अमेरिका में आपके मिसूरी मिसिसिपी है, साउथ अमेरिका में अमेजन है, पराना है, ऑस्ट्रेलिया में मुर्रे एंड डार्लिंग है, यूरोप में आपकी लॉयर है, राइन है, रोन है, डैन्यूब है, देन आपका एशिया में ह्वांगे है, गंगा है, अमूर है, एक्सेट्रा. So there are different important rivers in the different continents. Now distribution of water in India, that also we need to understand. वर्ल्ड का तो हमने देख लिया, इंडिया में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है. Despite of vast water resources in India, it is highly uneven distributed. That is quite difficult situation. While some places get the heavy rainfall leading to the flood and widespread danger, other places no rainfall, less than 10 centimeter rainfall annually. Even the same areas are prone to flood one time and other time drought. The two main sources of water in India are the perennial rivers and monsoon. They supply water to the large part of the country, which has made India an agricultural country. We are blessed. मैंने आपको पहले भी बोला कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ रिवर. सेकेंड थिंग, इंडिया में मानसून टाइप की क्लाइमेट है. साउथ वेस्ट मानसून राइजेज फ्रॉम द इंडियन ओशियन. जो मानसून यहाँ से अराइज होता है ना डिफरेंट ब्रांचेस के साथ, इट प्रोवाइड द अबंडेंट रेनफॉल टू द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स मानसून जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है बेटा. हम ये नहीं कह सकते इतना पानी आएगा. कई बार वीक मानसून भी आता है, बट स्टिल मानसून इज प्रोवाइडिंग अस द फ्रेश वाटर. कई बार इतना हैवी मानसून आ जाता है, फ्लड आ जाता है. कई बार इतना कम मानसून आता है, बारिश कम होती है, ड्रॉट हो जाता है. There are number of perennial river in northern India which originate in the high mountain. They not only provide the water but also make the northern plains. And those northern plains are very fertile. We also call them as food bowl of India. Now, these important river you can see the Ganga river which originate from the Gangotri glacier, then Yamuna from Yamunotri glacier, and you can see the Brahmaputra enter like this here. So Indus after that, आप ये देखो ये Indus है. So Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Indus, they are the important perennial river. They are aided by the large number of the tributaries and created a large river system. द रिवर इन द सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया की अगर बात करें तो वो सीजनल है नेचर में, सारा साल उनमें पानी नहीं होता है. लाइक नर्मदा है, महानदी, तापी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी एक्सेट्रा. नॉर्थ इंडिया हैज़ सॉफ्ट सॉयल, सो इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू डिग कैनाल्स टू सप्लाई द वाटर टू द वाटर डेफिशिएंट रीजन. वहाँ पे आप इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ना नहरों को, नदी का पानी दूसरी एरिया में पहुँचाने तक जहाँ पर पानी की कमी है. सो लार्ज नंबर ऑफ कैनल्स जो हैं वो क्रिएटेड की गई हैं, कंस्ट्रक्ट की गई हैं फ्रॉम पेरेनियल रिवर. दे हैव कंट्रीब्यूटेड लार्ज स्केल फार्मिंग ऑल्सो. अ कैनल कैन बी इनअंडेशन कैनल और द पेरेनियल कैनल. पेरेनियल मतलब जिसमें सारा साल पानी रहेगा, और इनंडेशन मतलब जिसमें कई बार पानी नहीं भी रहेगा. अब क्या होता है, ये इनंडेशन कैनल गेट वाटर व्हेन द सोर्स ऑफ रिवर इज फ्लडेड, तब इनमें पानी छोड़ा जाता है, इनमें पानी होता है. ऑन द अदर हैंड पेरेनियल कैनल जो होती है उसमें सारा साल पानी होता है और इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है इरिगेशन के लिए. इट कवर अबाउट 33% ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया. सो कैनल आर यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस इन द नॉर्दर्न प्लेन. इन द कोस्टल रीजन्स लाइक आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे भी यही काम करती हैं. भाखड़ा कैनल, देन आपकी सरहिंद कैनल, वेस्टर्न यमुना कैनल, अपर बार दोआब कैनल. सो इस तरीके की कैनल्स जो हैं डिफरेंट रीजन में वर्क कर रही हैं. देन देयर इज वन अनदर ईस्टर्न यमुना कैनल, अपर गंगा कैनल, लोअर गंगा कैनल, आगरा कैनाल, शारदा कैनाल इन उत्तर प्रदेश, then the Indira Gandhi Canal in Rajasthan. So these are the important canals in the North India. Where canals are not available, water is sourced from the tank, wells and tube wells. Now tube wells are being dug at a large number to trap the groundwater.
उससे फिर इरिगेशन होता है। सो इससे क्या हो रहा है, जो वाटर टेबल है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, जो कि क्लाइमेटिक हैजर्ड को जन्म देता है। The first tubewell in India was dug in Uttar Pradesh in 1930. The government helped farmers by granting loans and subsidies for installing the tubewells. अब ट्यूबवेल ज़्यादा से ज़्यादा लगाए गए वेल्स हैं। सो दे आर द चीफली फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साउथ इंडिया हैज़ रॉकी सरफेस फॉर अ लार्जर पार्ट, सो इट इज़ नॉट फिजिबल टू डिग द कैनाल्स हेयर। तो अब यहाँ पे इरिगेशन कैसे होती है, रेन वाटर पे डिपेंड होती है। रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है, उसे कलेक्ट किया जाता है टैंक्स में। अब हम आते हैं मल्टीपर्पज़ डैम्स पे। डैम्स क्या है, एक स्ट्रॉन्ग वॉल होती है, स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये नदी के ऊपर ना बड़ी सी वॉल टाइप की बनाई जाती है, फिर उसके पानी को रोका जाता है, फिर चैनल से छोड़ा जाता है, तो नीचे टरबाइन होता है, तो एकदम से जब वाटर फ्लो होकर टरबाइन पे गिरता है तो टरबाइन ऐसे रोटेट होती है, जिससे जो है एनर्जी निकाली जाती है, दैट इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो डैम सर्व्स द मैनी पर्पज एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज मल्टीपर्पज डैम, बिकॉज डैम सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी, dams supply the water for irrigation, dams help in the beautiful scenery also, people visited here as a tourism, dam develop the man-made canals और ponds. So dam जो है multi-purpose सर्व करते हैं, इसलिए इन्हें multi-purpose project कहते हैं। Now some of the major dams which are there in India, so भाखड़ा नंगल डैम है आपका पंजाब में, then सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, you can see after that टेहरी है आपका उत्तराखंड में, व्यास प्रोजेक्ट है आपका पंजाब में, रिहांड प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में, तुंगभद्रा है कर्नाटका में, हीराकुंड है ओडिशा में महानदी पर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर, गंडक प्रोजेक्ट एंड चंबल वैली. So there are so many multi-purpose river valley project or the dams which providing the hydroelectricity and as well as serve the many purpose. नोट पे देखते हैं बेटा, 1/2 of the world's total dams are located in China only. वर्ल्ड के हाफ अगर आप देखोगे ना डैम्स, सो चाइना में 50% डैम्स हैं. यू कैन सी द सरदार पटेल स्टैचू ओवर द नियर द नर्मदा रिवर. नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बात हम करते हैं. द मेन प्रॉब्लम अबाउट वाटर इज दैट वी आर यूजिंग एंड वी आर पोल्यूटिंग. वी आर यूजिंग लेस बट पोल्यूटिंग मोर. इतना पोल्यूट कर रहे हैं जितना नेचर रिसाइकिल नहीं कर पा रही है. वी आर पोल्यूटिंग आवर फ्रेश वाटर रिसोर्स by allowing the garbage to flow into them. In a very significant view, fresh water for us, it is essential that a combined effort should be made to conserve the water. हम क्या कर सकते हैं? Every drop of water is precious. So use the water wisely and economically. Prevent the wastage of water at the community level and as well as the individual level. Then, water should not be allowed to flow wastefully. Breaches in the river, canal, dams, pipes should be plugged. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा जो वेस्ट है वो उसमें जा रहा है. मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए इरिगेशंस के लिए, जिससे कि वाटर जो वेस्टेज है उसे रोका जा सके. ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, रिसाइकल वाटर इन एवरी पॉसिबल वे. इंडस्ट्रीज कर सकती हैं रिसाइकल, उन्हें करना चाहिए. डोमेस्टिक वाटर को भी हम रिसाइकल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल वाटर कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड इन वॉशिंग. किचन वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स इन डोमेस्टिक गार्डन एंड वाटर यूज्ड इन वॉशिंग क्लॉथ्स कैन बी यूज फॉर वॉशिंग फ्लोर्स. सिंपल सी बात है बेटा, घर में जब चावल धोते हैं ना, दाल धोते हैं पकाने के लिए, कुक करने के लिए, तो उसके पानी को पौधों में डाला और बड़े प्यार से क्या कराओ, देखो आज हम आपको विटामिन वाला वाटर दे रहे हैं. सो वी कैन टेक दिस स्मॉल बेबी स्टेप्स टू कंजर्व द वाटर. Polluted water should not be allowed to flow into the water bodies. इससे एक्वा लाइफ भी खराब होती है और हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा polluted हो जाती हैं. तो उन्हें पहले ही ट्रीट करके फिर जो है
वाटर बॉडीज में ड्रेन करना चाहिए. So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. We have less than 1% of water. For what? To available to use. Fresh water is available in river, lakes, ponds and undergrounds. There is a scarcity of water because polluted water is allowed to flow into the water bodies. After that, chief source of fresh water क्या है? That is the precipitation, rain. Distribution of water in the world and in India is very uneven. Canals are used for irrigation in North India, while tanks are used for this purpose in the Southern India. डैम्स को हम मल्टीपर्पज़ कहते हैं क्योंकि वो डिफरेंट पर्पज़ को सर्व करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड we should adopt the adequate measures to conserve the water because water is our life. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn to do the exercise carefully.